Hello Standard 3 student, myself your English teacher Pradeep sir. So student, in our previous class we were learning foggy figure, especially reading practice. Okay, we have done. Today I will explain you, and it is really very interesting. You listen carefully and try to understand exactly about the story. The student ମୁଁ ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫଗି ଫିଗରର ରିଡ଼ିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଫଗି ଫିଗର ଏ ପାଠଟିକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଫଗି ଫିଗର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ let us begin. Okay student, okay, foggy figure. So before I started reading practice of this lesson, foggy figure, I had asked you some of the question. Have you seen fog? How does it look? Have you ever heard of foggy figure? Does that mean a figure which appeared in fog? तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मु बहुत प्रकार क्वेश्चन मु पचारि कौन फग देखिछ कि फग माने बुझुछ ना, जोटा कि पूरा धला कुहुड़ी जोटा कि ढांकी जाइथिबो, बुझिलो स्टूडेंट। आमे जेतेबेले कुहुड़ी रो चादर ढांकी जाइथिबो, आमे पाखर जिनिस गुडाक मध्य देखि पारिबा नाही। तो विशेष करी नॉर्थ इंडिया रे जदि आमे एक्सपीरियंस होइछे ए विंटर सीजनटा आउ भल रूपे बुझी जाइथिबे। आम एपटे मध्य विंटर सीजन रे बेले बेले पूरा माने फग हुए, आउ आमे जणकू आमे दूररू देखि पारु नाहु। तो इफ वी हैड गॉन तो इन सम ऑफ द place which is very dangerous or which is not suitable to play or not suitable to stay, then what we do? We fear. आमे कौन करो, आमे डरी जाओ। आउ फगी फिगर कौन माने से फगी भितर कौन गोटे फिगर किए रही कि कौन गोटे भयानक माने 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 एनिमल बा any creature is there, or does that mean a figure which appears in fog? ना कौन जो फग रो गोटे शेप हुए, बड़ बड़ शेप माने जोटा आमे देखि पारू बेले बेले कौन सेटा कि ना। तो exactly in this story something different. तो if we try to understand, at last we will really understand what was the actually foggy figure in this story. So let's begin. See, Samir and Sarah woke up early. Though they were vacationing at their uncle's lake house the night before, Uncle Amar told them about the foggy figure that haunts the lake. Samir and Sarah were determined to see the ghostly creature before their vacation was over. Is it foggy outside? Sarah asked. As Samir looked out the window, Yup, let's go. Samir, let's go off the curtain and rush to the door with Sarah behind him. एठी कौन समीर आउ सारा टू brother and sister. Okay, so they had they spent their vacation means holiday, the period avakaso. Okay, so they spent their vacation in their uncle's lake house. तांको अंकल रो जो लेक हाउस अछि आउ सेठी से माने वेकेशन कटिया पाई जाइछंती।
आउ अंकल अमर तांको अंकल को ना अमर थिला से कौन माने विशेष करी तांको स्टोरी कहती तो से माने भाभी भाभी क्रिएट करि पारंती एथिपाई से तांको डरेवा पाई गोटे कौन कहीदेले मान ना गोटे फगी फिगर आउटसाइड रहे आउ से बहुत डेंजरियस आउ बहुत गोटे खतरनाक क्रिएचरटा आउ आमे सेपट के जीवनी तो इट विल बी सेफ इनसाइड तो एटा शुणिकी आउ समीर आउ सारार मनरे आसिला जे आमे जो वेकेशन सरीवा पूर्वरु आमे ये फगी फिगर को देखि नेबा ठीक अछि तो से माने पछ रास्ता आडू आउ देखिबा पई आरंभ से मानकर देख फगी हेची आउ से माने कोन जीवा पई बाहरी पड़िले It was only 5 a.m. So everyone else in the house was still asleep. As they crept through the kitchen to the back door, Sarah sniffed the air. It had the faint scent of hot chocolate and something sweet. She ignored it and followed Summit to the door. They went to the boat dock. The fog had settled over the lake, making it impossible to see anything. Do you see anything? Sarah asked, leaning forward for a closer look. Nothing. Do you think Uncle Amar was just trying to scare us with that story? Asked Samir. तो समीर आ सारा कौन है माने 5टा भोर सकाळू से माने धीरे धीरे बाहरी पड़ले कोडी आसिले अंकल केमते आसिले बाई क्रेफ्टिंग मूव्ड स्लोली बुझलो गुरुंडी ठीक अच्छे आउ से माने जो कि जो नौ स्थान हाँ कहीं एटा लेक हाउस ठीक अच्छे तो सेठी नौ स्थान अच्छी 50 अच्छी से प्लाटफॉर्म को पड़ेले ओके एंड सेठी से कहते कौन किसी देखा जाउची सारा पचारुची आउ समीर अमर मध्य अमर अंकल कौन आमको डराइवाई कौन कहते कि नाई तो किसी देखा जाऊनी बोली समीर मध्य कहते ओके स्टूडेंट तो अंकल अमर did have a good imagination. He had been telling Samir and Sarah stories for years, but this was the first scary story ever. Sarah had a feeling it wasn't made up. Sarah shook her head. Remember what Uncle Amar said. The foggy figure haunts the lake. We were on the dock. Maybe that's why we can't see him. The people in the story were in boats. Do you want to go onto the water? Samir asked. Sarah looked around trying to find Uncle Amar's boat, but the fog was too thick. Mom and Dad will be really angry if we go out on the lake alone in this fog, Samir said. Sarah shrugged. Maybe we don't need to go anywhere. We can sit in the boat while it's docked. That wouldn't be dangerous. So Sarah और समीर कथा केमते होचंती माने एठी गोटे जिनस आम मार्क करूँ अंकल अमर सारा समीर को माने सबु बेले तांकु स्टोरी सुनाती किंतु एटा फर्स्ट स्टोरी जोटा कि बहुत स्केरी माने डरावना जोटा कि डरिला भाया ठीक अच्छे फियरफुल ओके तो Sarah had a feeling it wasn't made up because Sarah shook her head. Remember what Uncle Amar said. Sarah कहते आउ अंकल अमर आमको कही जे फगी फिगर कौन करे हंट करे जे कि बोट रे से माने लेक बोट भितर जाती लेक रे जाती से मन को हंट करे तो डू यू वांट टू गो ऑन टू द वाटर समीर आस्क्ड कौन पानी भीतर को जीवा सारा कौन कहला ना 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 आमे एठी आम जदि जीवा मम्मी पापा बहुत रागिबे किंतु आमे एठी बसी पड़िबा आम अंकल अमर रो बोट रे बसी पड़िबा आउ तबे किछि प्रॉब्लम है न पारे कहीं आमे जदि भीतर को जीवा इट मे बी डेंजरियस
एठी थिले एवरीथिंग विल बी ओके. Okay, I'll go first, said Samir. He crept towards the end of the dock. He could barely see the outline of the boat. He carefully go into the boat and then reached for Sarah's hand. Sarah climbed into the boat and sat beside him. She was getting nervous now that they were on the water. Can you see anything? Asked Sarah. They looked around and gradually the fog began to lift. Sarah turned around and screamed, "The foggy figure! It was in the boat with them." ଏଠି ଦେଖୁଛ ଫଗି ଫିଗର ଆସିଯାଇଛି ବୁଝିଲ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା କାହିଁକି ଫଗ୍ଟା ବହୁତ ଥିକ୍ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରେପ୍ଟ କରିକି ଗଲା ଆଉ ହାର୍ଡଲି ସେ ବୋଟ୍କୁ ପାଇଲା ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ପୁଣି ସାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫଗି ଫିଗର ଓ ମାଇ ଗଡ୍ तो Samir and Sarah hugged each other in fear, but then they heard a laugh. Samir leaned towards the foggy figure. Uncle Amar, I knew the story would get you out of bed early enough to take a boat ride with me. Sarah felt happy that there was no foggy figure after all. Samir looked relieved too. Uncle Amar laughed and said, I am hungry. What do you say? I have baked breakfast for us. Sarah smiled. She remembered the smelling hot chocolate in the kitchen. Uncle Amar had baked pastry for them. They had a memorable boat ride in the company of the so-called foggy figure. तो कौन है जिते से माने foggy figure को आओ देखुंती से माने बहुत भयभीत हो गले से foggy figure हसुची हाँ से माने पाखक क्लोज देखिले जे कौन अच्छी अंकल अमर बोट रे अच्छी ओ माय गॉड आ अंकल अमर कौन कहले मु जानी थी ए स्टोरी कहला परे तमे आउ एत लेट सोई पारिबो ना तमे निश्चित रूपे फगी फिगर को देखिया पय आसीबो तो तमे बे आसी जाइछ मु आउ तम पय हम जतो भोक हे जाइथिबो तम पय मु कोन आन दीची माने pastries for them. Uncle Amar early morning he baked for Samir and Sarah and they enjoyed the their breakfast and the memorable boat ride specially with the company of so-called foggy figure. आ विशेष करी तांके ब्रेकफास्ट को एंजॉय कले आ विशेष द मेमोरेबल जोटा कि सब दिन पे मन रहा भाया जो बोट राइड होता सेटा का सहित जे जो फगी फिगर जोटा कि अंकल अमर तांको कहते से फगी फिगर सहित कौन है बोट राइडिंग है एटा गोटे पूरा मेमोरेबल बोट राइडिंग फॉर बोथ समीर एंड सारा. तो स्टूडेंट you have understood this lesson. I hope so. And here are word meaning like vacation, holiday period, अवकाश आम कहीपर, डिटरमाइंड डिसाइडेड निर्धारण करवा, क्रेप्ट बा मूव्ड स्लोली घुरुंडा लांबुड़ा, फेंट या स्लाइड जोटा कि अस्वस्थ बा सामान्य, स्केयर कॉज फियर भयभीत होगा डरवा, देन हाउंड्स मीन्स विजिट परिदर्शन करवा. ठीक अच्छे. डॉक ए प्लाटफॉर्म ऑन शोर माने जो लेक कूल जो नौ स्थान बा पोतास रही था. नर्भस माने एंग्सियस टेंशन बा अधीरता. ठीक अच्छे. स्क्रीम्ड माने साउटेड माने पार्टी करिबा कलरव करिबा. लीन झुंकीबा बा बेंड स्लाइटली. रिलीव्ड
माने भारमुक्त फ्री करिवा नो लॉन्गर एंक्सियस आउ टेंशन नाइन ओके तो एटा थिला डिफिकल्ट वर्ड्स वोकाबुलरीज यू आल्सो फाइंड तबे मध्य पढ़ला को जो वर्डटा डिफिकल्ट लगे ताकू लिखिबे आ ता मीनिंग टाकू लिखिबे पुणी वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास द exercises okay so see you student everybody so take care bye